you will see from whom you have received this check. The person from whom you have received this check is X. X was the person from whom amount was receivable. He was your account receivable. Since you have received amount from X, he is no more your account receivable, no more your asset, as account receivable are considered to be asset. There is decrease in asset should be credited. So you will mention name of X on credit side, though it is your account receivable, but there is decrease. That is why you are mentioning it on credit side. Let's see what date they are saying. It's 4. Mention date 4, and now see the amount, which is 1,20,000. So you will post over here on debit side 1,20,000, and same amount will be posted to the credit side 1,20,000. This is fourth A part. As you can see, we have received two checks. Now second check you have received from the second person, and the person is Y. Here he is mentioning that you have received two checks, one check from X and one check from Y. Same as you have received check, you will consider it as cash. What reason I have told you that? Until and unless that check is deposited into the bank, only at that time you will consider it as increase in bank, otherwise it is increase in cash. So you will again mention it is just a check. Okay, now it's not necessary that you will write the name check over here, you can skip it. So I'm just trying to make an understanding. It's not pure cash, it is check which you have received from your account receivable. The second person from whom you have received this check is Y. Who is Y? Y was your account receivable. Account receivable are usually assets. Assets should be written on debit side. But what had happened over here? You have received amount in shape of check from your account receivable. He is no more your account receivable, no more your asset. Decrease in asset should be credited. So you have mentioned Y on credit side. Second check's amount is 1,60,000. So this amount 1,60,000 you will mention on debit side, and same amount you will write on your credit side. Date is same, but what we will do, we will mention it is B, second entry. Fourth entry has been completed. This was 4 and 2 checks you have received, and now you will see what is on fifth entry. So try to understand it. Endorsed first check to purchase furniture. First check has been endorsed to purchase furniture from A. So what you have done? At first stage you have received a check. Now this check has been endorsed. Endorsed means transferred the possession of this check to somebody else. So what had happened? Since you had considered it your cash, this cash will go out. There is decrease in asset. Check number 1 you have endorsed. इसको सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको सिर्फ आपने समझना है कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्चुअल चीज़ नहीं है, और ना ही आपने इस पर ध्यान देना है। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा है, और आपने इसको पेपर में या नीट में ये काम नहीं करना। तो व्हाट वी हैव सेड, you have received a check. When you have received that check, you have written on debit side, and now this check you have transferred to someone else. So it had gone from you, means the cash in shape of check was your asset. Since you have transferred the possession of this check, it means your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited, so you have written check on credit side. That means cash on credit side. To whom you have given this check? Now you can see first check to purchase furniture from A. It means you have delivered this check to A. A was the person from whom you have purchased furniture, and he was your liability, account payable. Since you have given him this check, now he is no more your liability. There is decrease in liability. Decrease in liability should be mentioned on debit side. So you will mention name of A
who was your account payable on debit side. So account payable to cash, and now we'll see the date of this entry is 5. Again, there are two parts of this entry, so you will mention 5A for the first entry. And how you will write the amount over here, as I had told you that you have received this check and same check has been transferred, the amount would also be similar. 12,000 was the amount of check. आपने वही 12,000 यहाँ पर लिखे और सेम 12,000 आप क्रेडिट साइड पर भी पोस्ट आउट करोगे. इस तरह से you have completed 5A. Now let me see what is in the second part. यहाँ पर वो बोल रहा है एंड सेकेंड चेक. अब वो बारी उसी की है. सेकेंड चेक टू बी टू सेटल हिज अकाउंट. दूसरा चेक आपने बी को दिया, जैसे पहला चेक ए को दिया, दूसरा चेक बी को दिया. आपके पास जो दूसरा चेक है ये है, इस पे भी हम लिख देते हैं इट इज़ चेक नंबर 2. और ऊपर वाला जो चेक है उस पर भी मेंशन कर देते हैं कि वो चेक 1 है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यू वोंट राइट दिस चेक 1 एंड चेक 2 ओवर हियर. ये अननेसेसरी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगे एंट्रीज में इनका काम हो सकता है, तो आपको पता चल जाए कि चेक 1 किधर गया हुआ है और चेक 2 किधर गया हुआ है. ऑन सेकेंड स्टेप व्हाट हैड हैपेंड, जो कैश जो चेक आपने रिसीव किया था 2, ये भी चला गया आपके पास से, और ये किसके पास गया, किसी और बंदे के पास. तो अब इसका मतलब है आपने चेक को कंसिडर किया हुआ था कैश, तो कैश हैड गॉन आउटसाइड, और ये है आपका चेक 2, वो भी चला गया आपके पास से. लेकिन किसके पास गया वो नाम उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेकंड चेक टू बी. अब बी के पास चेक गया, बी वाज योर लाइबिलिटी. वाई यू विल ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ चेक, देर इज ओनली वन रीज़न, you were liable to pay the amount of that person. B, instead of cash you have just transferred your check which you have already received, and you have transferred this check to your account payable B to settle the liability. It means he is no more your creditor, no more your liability. Liability has been decreased. Decreasing liability should be mentioned on debit side. So you will mention name of B on debit side, though he was your account payable. Account payables are liabilities. Liabilities should be mentioned in credit side, but now after payment he is not your liability. Now liability is decreased. Decreasing liability should be on debit side, so you have mentioned name of B on debit side. अब वो दूसरा चेक इसको दिया गया, तो दूसरे चेक की अमाउंट आपने कैसे पिक करनी है. दिस वॉज योर सेकेंड चेक and you have transferred the possession of this check, so amount would be same. You cannot change the amount of check. तो दूसरा चेक 16,000 रुपये का था. You will write 16,000 over here, and same amount you will write over here. And what I have seen, एक ज़ीरो यहाँ पर ज़्यादा है, जो होता है जब आप काम कर रहे हो तो पुश हो जाता है. दैट्स नॉट द बिगर थिंग. अच्छी बात यह है कि आपको नज़र आ जाए बस वो. ओके, और यहाँ पर नहीं, 1,20,000 और 1,60,000 ही था. 1,20,000 हमने सही लिखा हुआ है, 1,60,000 वॉज करेक्ट ऑल्सो. बस नीचे आपने ज़ीरो कम लगाए हुए हैं, उन ज़ीरोज़ को भी ठीक करें. ओके, ज़्यादा सारे ज़ीरो हैं. और ये 1,60,000 था, इसको भी हम ठीक कर रहे हैं, 1,60,000. ऑलराइट जी, अब इसको आप समझ लें कि ये एंट्री है 5B. 5A एंड 5B कंप्लीट हुई. आपकी फिफ्थ एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड. अब आप आ रहे हैं 10 के ऊपर, और 10 में क्या कह रहा है, sold goods for cash 2 lakh and deposited the same into the bank. You can make 2 entries for this transaction, or you can make 1 entry at the same time. आपका जैसे दिल करे आप वैसे कर सकते हो. So what I will do, I will make 2 entries and I will try to let you understand if you want to make a combined entry. So both options would be given to you. You will decide which option is easy for you and do it according to your opinion. Sold goods for cash 2 lakh, और पहले हम इसकी बात करेंगे. Sold goods for cash. When you will sell any commodity for cash, what would be coming in? That is cash. Cash is your asset. Cash in hand is increasing, mean asset is increasing. Increase in asset should be debited, so you will write name of cash on debit side.
for what purpose or what was the reason? How did you receive this cash? You have sold your commodities. Sold commodities mean goods are going out, goods are near asset, they are going out mean asset is decreasing, decrease in asset should be credited. So you were supposed to write the name of goods over here, but in accounting, as there is our understanding, we do not write goods in accounting. In place of goods we write working. What is working over here? That is sales. So you will mention share, and there is no need to write goods over here. It was just to make you understood. कैश सेल्स हो गई, और आपको अब इनकी डेट भी हम मेंशन करते हैं, साथ में 10 डेट है, और अब इसकी अमाउंट को भी हम टैली करेंगे. सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर 2 लाख रुपीज़ आपने चीज़ें बेची हैं. मेंशन 2 लाख ऑन डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड. एंट्री 10 completed, बट अगेन इट हैज़ 2 पार्ट्स. यहाँ पर क्या बात हो रही है? सेकेंड पार्ट इस एंट्री का है डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक. और आपने जो पैसे रिसीव किया ना, एट द सेम टाइम यू हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. जब आपने पैसे रिसीव किए थे, यू हैव मेंशन्ड ऑन डेबिट साइड. नाउ सेम कैश हैड गॉन वेयर? इन द बैंक. अब क्या हुआ कि आपका जो ये कैश चूँकि जा रहा है, कैश इन हैंड इज डिक्रीजिंग. Cash in hand was your asset. Since you are paying this cash into your bank account, cash is decreased, mean asset is decreased, decrease in asset should be credited. So you will mention name of cash over here. Where this cash had gone? Into the bank. Bank again is your asset. When cash will be deposited in your bank account, amount present in bank will be increased. Increase in bank mean increase in asset. Increase in asset should be debited. So you will mention the name of bank over here on debit side. और कितनी अमाउंट होगी? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यू हैव रिसीव दिस कैश एंड सेम कैश यू हैव डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, तो अमाउंट भी फिर ऑब्वियसली सेम होगी. दैट वाज 2 लाख एंड यू विल मेंशन सेम अमाउंट ओवर हियर एंड सेम अमाउंट ओवर हियर. ओके, नाउ वी विल मेक इट A and B. 10th A, and second entry we will mention 10B. Okay, what I had committed, I was telling you that combine entry is also possible, so you can make another entry. वो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कह रहा हूँ. एक्चुअली क्या हुआ है कि you have sold your commodities, received cash, and you have deposited immediately that cash into the bank. Ultimate action is what? You have deposited the amount into your bank. It means your amount in bank has been increased. Bank is your asset, means asset is increased. Increase in asset should be debited, so you should debit bank account. And from which source you have received this amount? You have sold your commodities, goods are going out, goods are your near asset, asset is decreased, so you should write goods. You were supposed to write goods over here. But in accounting we do have an understanding, we do not write goods. In place of goods we write working. And what was working? It was sales. Unnecessary to write goods over here. So if you want to make a combined entry, you can make this bank to sales. Hopefully you people have understood. आप चाहें तो ये 2 एंट्रीज करें, कैश टू सेल्स एंड बैंक टू कैश. 2 एंट्रीज करें, या फिर आप सिर्फ एक एंट्री करें बैंक टू सेल्स और उसके आगे 2 लाख रुपीज़ लिख दें, ये भी काफ़ी है. और आपको ये बात पता है कि हम चूँकि सेपरेट एंट्रीज़ कर रहे हैं, तो अब मैं इसको, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और करके इस और में ये एंट्री आ सकती है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बस इसे ख़त्म मैं करने लगा हूँ और वापस हम अपनी रूटीन में जाने लगे हैं. और हमने 10B तक कंप्लीट कर लिया हुआ है. अब नेक्स्ट चेक करते हैं 10B के आगे क्या है. नेक्स्ट एंट्री इज़ 12, और वहाँ पर भी क्या हुआ है? द चेक इंडोर्स टू बी रिटर्न डिसऑनर. वेरी इंटरेस्टिंग. द चेक इंडोर्स टू बी रिटर्न डिसऑनर्ड. अब वापस आएँ. ये चेक था जो बी के पास गया हुआ था, वो चेक 2 था. आपने वो चेक 2 कहाँ से रिसीव किया था? वाई से. दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग टू मार्क दीज एंट्रीज़. ये पहले हम इसको एक एंट्री को मार्क करते हैं. ये चेक था और इसका दूसरा रिलेशन इसके साथ है. अब आप दूसरे को भी मार्क कर दें यहाँ पर. अब अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक क्रिएट होगी. पहले तो ये वाली एंट्री आप पढ़ें,
इसमें यू हैव रिसीव चेक फ्रॉम वाई, दैट चेक वॉज इंडोर्स टू बी बट रिटर्न डिसऑनर। यहाँ पर देखें चेक इंडोर्स टू बी, एंट्री भी आपको समझ आनी चाहिए, चेक इंडोर्स टू बी डिसऑनर हो गया। पहले स्टेप में यू हैव रिसीव दिस चेक फ्रॉम वाई and you haven't kept this check with yourself, you have transferred the possession of this check to B। वही चेक आपने B को पकड़ा दिया। अब where B will go? B will go to present that check to Y's bank, but Y's bank had dishonored the check and returned back. Where B will go? Obviously what had happened, you are the person who had transferred the possession to B. B will come to you and will say your check has been dishonored. It means the amount which has been paid to the B is not yet paid. He is again your liability. Again liability means increase in liability. Increase in liability should be mentioned on credit side. So you will mention name of B on credit side. He is now again your account payable because the check which you have delivered to B is dishonored. पता चल गया। अब आप सेकेंड स्टेज देखें, आपने जो चेक बी को दिया था, एक्चुअली यू हैव रिसीव द चेक फ्रॉम वाई, you will go to Y and will say the check which I have received from you is dishonored, so you are still liable to pay the amount and you are still my account receivable. I will receive amount from you. If Y is still your account receivable means he is still your asset. Assets should be mentioned on debit side, so you will name Y on debit side as your account receivable. So this is entry when the check has been dishonored. ये आपकी पहले डेट आप इसको मेंशन करें, वो 12 है, यहाँ पे मेंशन कर दें 12। और फिर अब इसकी अमाउंट क्या होगी आप खुद देखिए, इसके आगे अमाउंट लिखी नहीं हुई। जब आप 12th एंट्री पढ़ेंगे, यहाँ देखें द चेक इंडोर्स टू बी रिटर्न डिसऑनर्ड, नो अमाउंट हैज़ बीन मैंशनड। तो आपको अमाउंट क्यों नहीं दी? आपको ये बात पता है द चेक वॉज ऑफ 1,60,000 और सेम चेक यू हैव इंडोर्स टू नेक्स्ट पर्सन बी और सेम check has been dishonored. It means same amount would be over here, that was 1,60,000, so you will write 1,60,000 on debit side and same amount you will post on credit side. 12th entry has been completed. Now let's see आगे क्या चल रहा है. After 12 we have 16 number entry, or what that entry is saying, purchase stationery and paid by check. Purchased stationery and paid by check. क्या कर रहे हैं हम? We have bought stationery. Stationery, to understand stationery there are two aspects. If you will consider that stationery is still not being used, so it is your near asset. When you are buying your stationery, mean your near asset has been increased. Asset is increasing means you should mention the name on debit side, so you will write stationery on debit side. This is first aspect. Secondly, consider stationery as an expense, because when you will buy this stationery it will be used within a shorter period of time, and expenses are mentioned on debit side. That is why you have mentioned stationery on debit side. So both aspects stationery would be debited. When you have bought your stationery, it means you will be paying amount. When will be paid, cash in hand would be decreased. Cash was your asset. Due to payment your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited, so you will mention your cash on credit side. Now let's see what was date. Stationery to cash, it was 16. Here was stationery, purchase stationery, and that is 16. यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें 16. Okay guys, one thing I have seen that purchase stationery वो छुपी हुई थी चीज़, and stationery is purchased by check. चेक के ज़रिए आपने stationery purchase की है, it is not cash transaction. अब आप क्या करेंगे? When you have given that check to the stationery owner, the stationery person or the shopkeeper will go to your bank, will present that check, with which what will happen, your amount present in your bank would be withdrawn. Bank account is your asset would be decreased in asset should be credited, so you will mention name of bank
on credit side. What I had said, actually you have purchased stationery by check, so it is not cash, it is check, due to which your bank account would be decreased. अब इसकी अमाउंट भी आप चेक कर लेते हैं. स्टेशनरी की अमाउंट है जी 10,000. तो आप क्या करेंगे, 10,000 यहाँ लिखेंगे. सेम अमाउंट would be written on credit side. This way your 16th entry has been completed. And again you have got entry number 16. अब हमने इनको थोड़ा सा फ़र्क डालना है, तो इस वाले 16 का नाम आप A रख देते हैं, और दूसरी जो A वाली एंट्री 16 वाली एंट्री है उसका नाम आप 16B कर दें, ताकि दोनों का फ़र्क हमें समझ में आए. 16 जो नेक्स्ट वाली एंट्री है उसको आप पढ़ें. ये 16 है. पेड वेजेस इन कैश. It means you have paid your wages. Whenever you are paying, it means cash in hand is decreasing. Cash in hand is your asset. Asset is decreasing. Decrease in asset should be credited, so you will mention cash on credit side. And why you have paid this cash? Second 16, you have paid wages. Wages is your expense. Expenses should be mentioned on debit side. So you have named wages on debit side. अब इसकी अमाउंट भी आप चेक कर लें, which is 20,000. तो 20,000 you will write on debit side, and same amount you will be writing on credit side. Entry number 16 you have completed. Now let's see what is entry number 18. Received from P 1,60,000 on account. P is the person, and from P you have received some amount, that is 1,60,000. If you are receiving amount, means cash in hand is increasing, which is your asset. Asset is increasing. Increase in asset should be debited, so you will mention name of cash on debit side. From whom you have received this amount? The person name is P. P was the person from whom amount was receivable. It means P was your account receivable. Now you have received the amount. He is no more your account receivable, no more your asset. Asset is decreased. Decrease in asset should be mentioned on credit side. So you will mention name of P on credit side in spite of the fact that he was your receivable. So he was your account receivable from whom amount was receivable. You have received the amount. Account receivable, you have received the amount from your account receivable. It means he is no more your account receivable, no more your asset. Asset is decreased, with effect of which you have write the name of account receivable due to decrease in asset at credit side. अब इसकी डेट भी आप पढ़ लें, क्या लिखी हुई 16 के बाद 18 है. डेट आप मेंशन करें, और 1,60,000 मैंने अमाउंट देखी है, दोबारा भी हम चेक कर लेंगे. 1,60,000 इधर आएगा और 1,60,000 ही इधर आएगा. इन दिस वे 18 एंट्री कंप्लीट हुई. 18 की अमाउंट दोबारा चेक कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री इज़ 22. क्यू अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू द बैंक. यहाँ पे देखें, क्यू अ कस्टमर deposited amount into the bank. If some customer had deposited amount into the bank, then what will happen? Your amount present in your bank account would be increased. Bank is your asset, mean asset is increased. Increase in asset should be debited, so you will mention name of bank on debit side. वापस चलिए, और किसने पैसे जमा करवाए हैं? वो है Q. Q was the person from whom amount was receivable, and he had directly deposited into your bank. That means amount is no more receivable. He is no more your account receivable. Account receivable are asset, and after receiving the amount, he is no more your account receivable. Asset has been decreased. Decrease in asset should be credited, so you will mention name of Q on credit side. Though he is your account receivable, but after receiving amount, he is no more your account receivable. Asset decrease. Decrease in asset should be credited. The name of Q on credit side. Amount check करते हैं. 70,000 है. Write down 70,000 over here, and same amount you will write 70,000 on credit side. इसकी 18 के बाद की डेट थी 22. आपने 22 यहीं पे लिख दिया. After completion of 22, let's see what is our next entry, that is 25. इसमें भी दो 25 है, और वो कह रहा है पेड कैरेज.
आपने किराया अदा किया, कैरेज पे किया। जब भी पेमेंट करेंगे इट मीन्स कैश इन हैंड इज डिक्रीज्ड, कैश इन हैंड इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। तो आप कैश को मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे। किस लिए? यू हैव पेड द कैरेज, कैरेज इज जस्ट लाइक कंसिडर इट एज अ रेंट, fare. You have paid carriage if you are using any transport. So what you will do, you will pay fare. That fare is to be considered as carriage, as an expense. Expenses place is what? Debit. So you will mention carriage on debit side. अब इसकी आप डेट भी मेंशन करें। 2/25 वाली हैं तो 1/25 को आप समझ लें कि वो 25A है, और अब अगली होगी 25B। पहले हम कैरेज की अमाउंट भी देख लें कितनी है, नीचे रह गई। कैरेज है 4000 का, तो आप 4000 डेबिट साइड पे मेंशन करें और 4000 वुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड। इस तरह से 25A कंप्लीट हुई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकंड 25। जो दूसरी वाली 25 है उसमें कह रहा है बॉट फर्नीचर पेड कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया। इफ़ यू आर बाइंग फर्नीचर दैट मीन्स देर इज इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर इज योर एसेट, अल्टीमेटली इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू विल मेंशन नेम ऑफ फर्नीचर ऑन डेबिट साइड। दूसरी बात क्या, कैश पे किया है? यस, कैश पे किया है। व्हेन यू आर बाइंग फर्नीचर अल्टीमेटली यू विल पे कैश, कैश इज योर एसेट, देर इज due to payment there is decrease in asset should be credited, so cash would be mentioned on credit side. अब आप चेक करें कि फर्नीचर था कितने का, 1,20,000 का था, तो आप यहाँ मेंशन करें 1,20,000 on debit side and same amount you will write on credit side. 25B is completed. Let's see what is next. We have 30, again two entries 30, और यहाँ पर वो कह रहा है बैंक डेबिटेड इन इंसिडेंटल चार्जेस, बैंक हैड डेबिटेड incidental charges. Please let me explain that if bank needs some amount from you, let's say bank requires some amount from you due to any expense, he will not ask you to come to the bank branch and will not ask you to pay in cash. What bank will do, will deduct amount from your account. This is the same thing bank debited for incidental charges. Charges are the expense and expense place is debit, so you will mention इंसिडेंट चार्जेस। जगह कम है तो थोड़ा कम करके लिख देते हैं। और चूंकि इंसिडेंटल चार्जेस आर डिडक्टेड बाय द बैंक, द अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज। बैंक अकाउंट इज योर एसेट, अमाउंट डिडक्टेड मीन्स अमाउंट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट शुड बी मेंशनड ऑन क्रेडिट साइड, सो यू विल मेंशन योर बैंक ऑन क्रेडिट साइड। अब इसका नंबर हम चेक कर लेते हैं। 2 एंट्रीज हैं 30 वाली, तो इसका आप नाम रख दें 30A और अगली एंट्री को आप रख लीजिएगा 30B। ऊपर वाली डेट गलत लाइन में लिखी गई है, उसको हम ज़रा एडजस्ट कर देते हैं, वो ऊपर चली गई। अब जो 30A की अमाउंट है वो चेक करें, दैट इज़ 3000, सो यू विल राइट 3000 ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस एंट्री and same amount you will post on credit side. अब चलते चलते लास्ट एंट्री पे पहुंच गए हैं, और लास्ट एंट्री क्या कर रही है 30 में, डिपॉजिटेड ऑल कैश ओवर 40,000। इसका पहले मतलब आपको समझना पड़ेगा। डिपॉजिटेड ऑल कैश ओवर 40,000 मीन्स 40,000 से ज़्यादा कैश। द कैश विच इज़ मोर देन 40,000 उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। पहले आप एंट्री कर लें डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू द बैंक। इफ़ यू विल डिपॉजिट अमाउंट इनटू बैंक मीन्स कैश प्रेजेंट इन बैंक अकाउंट वुड बी इंक्रीज्ड। बैंक अकाउंट इज़ योर एसेट, इट मीन्स एसेट हैज़ बीन इंक्रीज, सो बैंक वुड बी डेबिटेड। और क्या हो रहा है कि यू आर डिपॉजिटिंग योर अमाउंट इनटू योर बैंक, सो कैश इज़ गोइंग आउट, कैश इन हैंड इज़ डिक्रीजिंग, कैश इन हैंड इज़ योर एसेट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, सो यू विल मेंशन नेम ऑफ कैश ऑन क्रेडिट साइड। अब मसला ये है कि अमाउंट 40,000 से ज़्यादा की बात वो कर रहा है, वो कितनी है वो तो हमें पता ही नहीं है कि हाउ मच अमाउंट वी डू हैव। इसका
पहले थीम समझिए कि अमाउंट प्रेजेंट, अमाउंट विच इज़ योर कैश इन हैंड, इफ़ इट इज़ मोर देन 40,000 दैट अमाउंट वुड बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर कैश का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से आप चेक करेंगे कि आपके पास कैश, हाउ मच कैश यू हैव रिसीव्ड, दिस विल बी शोन बाय डेबिट साइड, हाउ मच कैश इज गॉन और पेड, ये शो करेगी कि हाउ मच कैश हैज़ बीन डिक्रीज्ड। कैश प्लस कैश माइनस डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉलम विल शो यू हाउ मच कैश इज प्रेजेंट इन हैंड। वहाँ पर आप चेक करेंगे कि हाउ मच कैश इज मोर देन 40,000 और उस अमाउंट को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको समझ लग गई है, इसका मतलब है जब तक लेजर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू मेंशन अमाउंट ओवर हियर। Alright जी, it means our journal entries have been completed. You have seen this was your last entry, deposited all cash over 40,000. Entries are completed, but the main task is still incompleted, and that is to transfer these journal entries into the cash book. And we are going to start this process. You may take break, pause the video and come back. I'm just going to start it like to post these transactions into cash book.